This is the lecture 1 of your applied economics course. This is the lecture 1 of your applied economics course, and we are going to learn some basic concepts into this, and we will be later on trying to apply these all concepts on the real world, and we shall try to link the theory with the real world situations very soon, inshallah, and that will be very interesting for you, and you will be definitely enjoying this when you will be working with these all kind of theories, and you will be looking at their practical applications in the real world. So you perhaps now know about this term, applied economics. Again, we are trying to apply the economic theories on day-to-day things that we do and day-to-day operations of our life. And like we as a decision maker decide about a lot of things, like say for example being household, we decide about where to spend what and where not to spend. And similarly, being a businessman, we try to know that how things basically, how the money can be spent on different kind of things and how can you multiply your money. And similarly, you can basically learn about the different kind of economic applications in different kind of the subjects. So this is the, this introduction is from the W.J. Barber, History of Economic Thought. And the textbook that actually you can consult is John Sloman's economics book. Now, what do economists study? The first question, what do economists study? And the second thing that we are going to learn is the schools of thought. There are different schools of thought. When you say school of thought, you always have got different kinds of sections into the understanding of that particular kind of the subject. Like say for example, when you talk about religion, Islam. Yes, sir. Islam has got different kinds of schools of thought. Like say for example, they have got Hanafi, they have got Shafi'i, they have got Maliki, they have got other people, and they actually have got different thoughts. Different people have interpreted different economic laws, different economic orders, different economic rights and duties in different ways. Like if you follow one particular school of thought, like if you are Hanafi, if you are Maliki, if you are Shafi'i, or if you are if you just belong to any other school of thought, you basically have got their understanding of different kinds of happening, that why is this happens, why you have got this or that happening. So we will be doing this, and we shall be looking at different schools of thought in economics. The economics, different people, different schools of thought have explained different kind of things in different ways. Like say, for example, classicals, new classicals, Keynesians, new Keynesians, Austrian. There are so many schools of thought that basically actually have got their own ways of thinking about economic phenomena. Like say, for example, we shall be looking at, say, for example, if you look at classical economics. This classical economics is started with Adam Smith. This new classical economics and classical economics, new classical economics is a variant of this classical economics, and that actually later on that initiated, that was introduced and that was studied by different people in the later part of the 19th century, and up to present day we are studying the classical school that we study is not classical, it's a new classical school of thought. So classical school of thought begins with Adam Smith, and also we have seen the contribution from Robert Malthus, David Ricardo, Karl Marx, and similarly we have got new classical economic preachers and practitioners like Stanley Jevons, Leon Walras, Alfred Marshall. You have studied some of the definitions of economics from Alfred Marshall. And up to the present day, there are so many people have contributed into this school. And we also know another school, which is called Keynesian school. You must have heard about this school. This is the macroeconomics. The classicals and new classical schools generally concerned or with microeconomic decision making, whereas this Keynesian economics is concerned with or is related to the macroeconomic decision making.
When you take decisions at the macro level, when you take decisions at the level of the country, when you take decisions, or when you look at the things objectively overall the country, that basically is a macroeconomics, and that is a Keynesian economics. So this Keynesian economics was introduced by, do you know this guy, John Maynard Keynes? Have you people heard about this guy, John Maynard Keynes? Has anybody from you heard about this guy, John Maynard Keynes? Or any of the people actually in the list of this slide, like, do you know Adam Smith? Do you people know Adam Smith? Yes, sir. Adam Smith को तो sir well-known person है. All right. What did he do? Do you know that? ये तो बहुत ही weird लिखा है जिसने भी लिखा है. This is the like the Adam Smith. Umair, this is something not correct. Like you, of course, this is. We are not joking here. We are not. It's not something that you should do here. Yeah. So Umair, just try not to do or write such things in the future. Okay. Classical economics. Classical economics is started with Adam Smith, and he is called the basically the father of economics. He started this book, and actually this book got like so much common in 1776, but he started that in 1766. And the book's name was An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. What actually Adam Smith did, he made an inquiry about that what is the nature and what are the causes of accumulation of wealth of different countries all over the world. Why some nations are rich and why some nations are poor. Why some nations actually have got more wealth and why some nations have got less wealth. Why some nations have been able to create more value and they have become so advanced, and why some nations have been struggling, and why some nations actually are struggling. Like, say, for example, you have got two countries living side by side, North Korea and South Korea. The South Korea is one of the developed countries in the world, which actually has got a lot of money. I'm not understanding. Sorry? Sir, I cannot hear your voice, sir. आपकी सभी को वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, क्लियर आ रही है. अच्छा, अगर आप yes sir, थोड़ा सा डिस्कशन है. अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट बाजू का स्लो होता है तो इट मे हैपेंस. अगर कंटिन्यूअस हो तो प्लीज मुझे लेट मी नो. आई विल ट्राई टू फिक्स दिस. Okay, so some of the students facing the problem, some of the students are not. So if you keep facing this problem, do let me know. I'll try to fix this. No sir, no voice, sir. No voice. You're not able to hear anything. All right. So this book, let me know if you face any difficulties in listening to me. An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations was written by Adam Smith, and that began the study of economics. The economics started with this particular kind of the book, and this basically book was, and this was basically, that Adam Smith was from Scotland. So that is what because that started the Scottish Enlightenment, and that basically began, like the economics began with this kind of a theory. So 18th century commercial expansion. You know what happened, if you remember that the world experienced different kinds of revolutions. The first revolution that came in the world was the agricultural revolution. You must know that. This agricultural revolution transformed into how we transited from this, agricultural revolution. What actually came next to the agricultural revolution? Initially we had got this agricultural revolution.
The second revolution that came, as Karishma actually has written, is industrial revolution, and that is what something happened, and that was the commercial expansion. At that point of time, all this commercial expansion took place in England, Holland, and at different kind of places. And at that point of time, there were so many people who started studying these all things. Like, say, for example, if you remember the course of your management, in management course, we discussed that most of the management scientists and the theorists actually have got popularity during this kind of a revolution, when they started seeing when the scope of the business is expanded, when the people started producing at a mass level, they started knowing and they started trying to understand that how basically things are managed and how things basically happen. Anyway, this particular kind of the book and understanding of that book actually came during the 18th century, and when the commercial expansion was taking place, especially in England. And another school of thought emerged during that time that was called mercantilism. What is mercantilism? The mercantilists basically are called the business people, and they were quite like, conservative in the sense they actually were quite against the openness of the economies. According to mercantilism, followed at that particular point of time, they said the objective of the government policy is to increase state reserves of gold by maintaining trade surplus. So what they supported and what they said, the country should do export, but country should not import. You know what actually was the basis of trading at that particular point of time? Like, आजकल एक country, Pakistan, if trade with India or trade with other kind of countries, which currency it uses? Which currency we use to trade with other nations? Dollar. Dollars. Before that, dollars, what was used as a medium of exchange between the nations? Do you know that? I guess, sir, or switch to new. Sorry? No idea, sir. Gold. The gold was actually the main medium of exchange, up to a certain point. When there was no international currency, people used to exchange things for gold. And gold is something that you cannot create. It is a natural good. It is not created, rather it is explored. And like you cannot, like, say for example, as you can print more money, you cannot create more gold. These golds are excavated. These golds are dug out from the earth, and this gold is basically like, is a natural thing. So at that point of time, there were so many people who think that this international trade is not beneficial for you if you import commodities. Because when you import commodities, अगर आप import करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा import कर रहा है, तो पाकिस्तान को import करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? What do we need to import? डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है. और जब हम import करते हैं तो उससे हमारे डॉलर रिजर्व्स के साथ क्या होता है? When we import so much, ये बहुत ज़्यादा decrease कर जाते हैं. At that point of time, the gold was being used as a medium of exchange between the nations, and this particular school of thought was so much against of the movement of gold outside of the country. They wanted the countries to keep gold, and they were allowed to make exports, like, because when they export, they got gold, but when they import, they have to give gold to other nations. So according to this mercantilism view, that the government should maintain the trade surplus, it should have got more exports than imports. At that point of time, there was a gold standard. Everything was measured in terms of gold, and that is something was the, like, as you have got now the fiduciary systems, and you have got other kind of systems basically in place. At that point of time, there was a gold standard. Export subsidies to manufacturing and import restrictions. What mercantilism had got the view that you should encourage exports and you should discourage imports. So this is what basically was the back. Yes, sorry. मतलब gold standard नहीं है, but सर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी तो मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट को ही ज्यादा वो करते हैं ना. नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन द थिंग वाज लाइक दे वर क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव इन देयर पॉलिसी कि आपकी जो ओपन, इफ यू शुड ओपन द इकोनॉमी इन वन वे ओनली, द थिंग्स ओनली बी going out from your country to other countries for sale. You should not be buying things from the other country. आजकल देखिए bilateral trade है.
म्यूचुअल ट्रेड है. अगर आप कोई चीज Yes, sir. खरीदते हैं तो आप कोई चीज बेचते हैं, एंड दैट सेल परचेज बेसिकली हेल्प ऑल द नेशंस. Like say for example, you are selling something that you can produce at a cheaper price, and you are buying something which some other country can produce at a cheaper price. So I hope I'm making sense to you, right? So that is what something was the background of this whole classical school of thought. The classicals criticized mercantilists. Classicals were actually in the view that trade should be open. Now, if I ask you this question, what actually is, in your view, is better for a country? Should it have a restricted trade or should have got its open trade? Like, should they be allowing Restricted trade. restricted trade? And why do you think so? Sir, because in case of open trade, every person has their own liberty to do anything. But in a restricted trade, we have to be maintain. In fact, not we have to be, the economy and the government has have a chance to balance each and everything. That's my perception. All right, it's all right. It's all right. Yes. It What means else? it means if we import many things, so the government has to take the bold step and avoid those type of thing which is expensive for the citizen of Pakistan. Okay. Okay. If the And same thing is made by our Pakistan, so why should we take again your example, which is just Gigi, definitely. I'm just sharing my view about this. Okay, openness of trade is beneficial for everyone. Like say for example, a person, say for example, you as an individual, as an household, आप अपने घर में मौजूद हैं, आपके घर का नलका अगर खराब हो जाता है तो आप अपना नलका, दो तरीकेकार हैं कि either you fix your tap yourself or you call a plumber. What you should do? Now, what you should do will be depending on that what is the opportunity cost of your time. Like if say for example, you are a businessman and you basically don't, if you spend 2-3 hours with your tap, so you will lose a lot of money if you are not actually like in the business. And you can earn a lot more by doing your business than you have to pay to the plumber to fix your tap. इस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप अपना टैप खुद फिक्स करते हैं तो आप 100 रुपए बचाते हैं, लेकिन उस 100 रुपए बचाने के लिए आप चूंकि बिजनेस में अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं या कोई और अपना काम छोड़ते हैं, उसकी वजह से आपको 500 रुपए की कॉस्ट आती है. You are paying 500 rupees to save 100 rupees, which is very irrational. Similarly, the countries like say for example, Pakistan can produce a lot of things a lot cheaper than some other countries. And similarly, there are so many countries which can produce a lot of things so cheap as compared to our country. So something similar happens in the international trade. In the international trade, we sell those things that we can produce cheaply, and we buy those things which other people can produce cheaply. Like say for example, at certain point of time, there was an American president. He actually, like, he was going somewhere and he stopped at the stall to buy roses for his wife on Valentine's Day. And somehow a question came in his mind and he asked his secretaries, where do we get these all roses from? Yeah, this is what basically I'm talking about. The North American president, USA के president की बात कर रहा हूं मैं. The secretary of the USA president told him that we import them from the Latin America. Latin America means other kind of Mexico and other kind of the countries basically that basically speak Latin. So they basically said like, we don't produce these roses here. We produce these roses and we buy these roses from countries which actually are there in Latin America. He said, why don't we produce these roses in our own country? So what he did, and this is a real incident that happened, he made like, he ordered the secretary to make a feasibility that why can't we produce these roses in our own country? Why do we have to import them all the way from Latin America? And when the report came, कि जो उन्होंने जब report बनाई कि हम जो इसको roses बनाएं, तो what the report said, कि हमें roses बनाने के लिए जो environment चाहिए, जो energy चाहिए, it is not available in our weather. We don't have got that weather that supports the production of roses. We will have to create artificial kind of energy. And with that artificial kind of energy, if we produce that many flowers, we can actually produce by using the same energy to produce many more thousands computers. So it is more rational for us to produce computers and buy roses from the Latin America and sell those computers to them and just like, get some money for it. So the open trade is always good for the countries because you buy something like, say, for example, you are getting help from a plumber. And this plumber is charging, of course, a price for his services.
but you are saving your time, you are saving your energy, you are saving your pain. And that what basically how much is the value of time saved that you save, and how much is the price that you give to the plumber. So that is something, is a comparison that the countries also do with their products. So the open trade is always beneficial, but somehow these open trade policies bite developing countries, because developing countries generally have got cost inefficiencies in every area. Like say for example, if we compare ourselves with China, we compare ourselves with India, we compare with ourselves even Bangladesh, we compare ourselves with some other nations in Europe or UK or USA, so you will find out like we are not cost competitive. We produce everything so much expensive, so the countries all over the world don't buy things from us. Rather, we have to buy things from China. Why everybody is buying Chinese products? Because they are available at very lower cost. So this basically is something Adam Smith basically came out and he criticized this mercantilist view. Yes, Barkat? So what did Adam Smith do? He criticized the mercantilism, and he said the surplus arises from trade but from production. So surplus arises not from trade but from production. So wealth is a product of labor and land with the assistance of capital. So what you should do, you should produce, like Adam Smith gave the idea of comparative advantage, that you should be producing something that basically is more beneficial for you, and you can produce cheaper, and whatever you are producing cheaper, you can sell it to the countries and you can get some money for that, and rather than producing something which actually is not suitable for your suitable to your environment. So Adam Smith gave the idea of market economy. Do you understand market economy? देखें, अगर आपको पता हो कि economics basically tries to answer 3 questions. Do you know what are those 3 questions? So Barkat says no. Does anybody say that he knows about these questions, the basic questions that economics tries to answer? Sham says production and consumption. Anybody else? जी बिल्कुल, ये करिश्मा सर क्वेश्चन रिपीट कर दें? नहीं, करिश्मा का जवाब ये देखिए. Economics tries to answer 3 types of questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. करिश्मा, आपका माइक काम नहीं कर रहा है? हाँ, तो आप बोले जरा इसको, क्वेश्चंस को. काम नहीं कर रहा है माइक आपका. So economics basically answers 3 basic questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, इसका डिसीजन किसको लेना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? कौन, who should decide what to produce? जी सॉरी सर, डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा ना. और अगर यही चीज आपको गवर्नमेंट बताएगी क्या प्रोड्यूस करना है आपने, जिस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह देखें कि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं या फाइनेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनेंस की मार्केट है, लोगों की डिमांड है, जो फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं उनकी, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स. आप अपने टाइम से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर गवर्नमेंट आपसे कहे कि आपने इंजीनियर बनना है, या आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि आपने इंजीनियर बनना है, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, तो कैसा रहेगा? जी सर. हाउ वुड यू फील कि अगर आपके पेरेंट्स सजेस्ट करें आपको कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, तो या आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, क्या चीज ज्यादा बेहतर है? सर ये तो कंपेलिंग बिहेवियर होगा, लेकिन सर अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास डिमांड किस चीज की है, तो ज्यादा बेहतर तो अप्रोप्रिएट तो यही है ना कि हम उस डिमांड के हिसाब से मूव करें. जी बिल्कुल. देखिए, असल में प्रॉब्लम क्या है कि असल में हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं व्हिच ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज. लाइक से फॉर एग्जांपल the market economy. Market economy suggests that all answers of these questions should come from market. The market economy says that all these questions, the answers of these questions should come from market. How the questions can, like the answers can come from market?
कैसे आएंगे मार्केट से इन तमाम सवालों के जवाब? व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे पता लगेगा हमें मार्केट से? डिमांड से। जी बिल्कुल, डिमांड से। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे पता लगेगा हमें मार्केट से? देखिए हाउ टू प्रोड्यूस हमें पता लगेगा क्या चीज सस्ता, कौन सा मेथड सस्ता है। जिस तरह देखिए मिसाल के तौर पर आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो दो किस्म के मेथड्स आप यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। एक ऐसा मेथड जिसमें आप ज्यादा लेबर यूज करते हैं, कम मशीन यूज करते हैं, और एक ऐसा मेथड जिसमें आप ज्यादा मशीन यूज करते हैं, कम लेबर यूज करते हैं। आपको क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा मशीन यूज करनी चाहिए या ज्यादा लेबर यूज करना चाहिए? मशीन। मशीन यूज करनी चाहिए, लेबर यूज नहीं करना चाहिए। कैसे डिसाइड करेंगे आपको मशीन यूज करनी चाहिए? सर बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी सर। बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है कि किसकी कॉस्ट हमें लो आ रही है। जी देखिए कॉस्ट पे ये कोई भी डिसीजन जो है आउटराइटली नहीं लिया जाता इकोनॉमिक्स में। एवरी डिसीजन हैज गॉट रीजन। क्या कॉस्ट है मशीन्स की, क्या बेनिफिट है मशीन्स का, क्या कॉस्ट है लेबर की, और क्या बेनिफिट है लेबर का। ये भी मार्केट से पता लगता है आपको। मार्केट हमें बताती है कौन सी सस्ती है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके मुल्क में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह बरकत ने कहा कि हम मशीन यूज करें, तो करना चाहिए आपको मशीन यूज जब आपके पास बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। नो सर। देखिए एथिकली आपको नहीं करना अपार्ट चाहिए। फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम अगेन कॉस्टिंग, बट फिर भी क्योंकि ह्यूमन में उसमें एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे और प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट करती है। देखिए एरर तो ज्यादा चांसेस की बात नहीं है। देखिए मसला बेसिकली होता है कि बिजनेसेस गो विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि आपको कौन सी चीज सस्ती पड़ रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वालिटी को, जाहिर है आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लेबर को आप यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ मशीन्स। बाज़ औक़ात ऐसे मशीन्स को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखें ना, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनमें ज़्यादातर जो प्रोसेस हैं वो जो कैपिटल इंटेंसिव हैं, उनमें ज़्यादा मशीन्स यूज़ होती हैं, कम लेबर यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके पास मशीन ज़्यादा है, लेबर कम है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आमतौर पर जो लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं, कम मशीन, क्योंकि लेबर सस्ता पड़ता है। बाहर के ममालिक में लेबर बहुत महंगी है, यहाँ के मुकाबले में लेबर बहुत सस्ती है, वहाँ के मुकाबले में यहाँ लेबर बहुत सस्ती है। इट ऑल डिपेंड्स। देखें आप कभी भी लेबर को इसलिए ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेबर अनएम्प्लॉयड है। आप मार्केट इकोनॉमी में है तो आप वो चीज यूज करेंगे जो कि आपको सस्ती पड़ती है। अगर आपको मशीन सस्ती पड़ती है आप मशीन यूज करेंगे, अगर आपको लेबर सस्ता पड़ता है तो आप लेबर यूज करेंगे। तीसरा सवाल, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए? कैसे पता लगेगा आपको मार्केट से? सर अगेन डिमांड के मार्केट में डिमांड किस चीज की है? देखिए हु कैन अफोर्ड फॉर इट। आप किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? पर कंज्यूमर्स जो आपसे चीज खरीद सकते हो। ऐसा ही है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि आप चीजें प्रोड्यूस करें गरीबों के लिए, जिनके पास आपको पैसे देने के लिए ना हो, तो आप उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे चीजें? नो सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई क्यों नहीं सर करेंगे? चीज बिकेगी नहीं, क्या फायदा प्रोड्यूस करने का? बिल्कुल। आप नहीं, चीज तो जाएगी लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे ना आपको। अब इस इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए सर। बिल्कुल। लेकिन देखें दूसरा जो सिस्टम है वो है गवर्नमेंट का सिस्टम, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इस बात को डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। आपको जो रिसोर्सेज है उससे क्या प्रोड्यूस। रशिया एक जमाने तक जो है बहुत ही प्योर कमांड इकोनॉमी थी, जिसमें सारा कुछ डिसीजन जो था वो गवर्नमेंट लेती थी। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस, एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखें ना गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वो किसके लिए हैं? करप्शन को हटा के अगर आप सिटीजन। सिंपल बात करें, गरीब लोगों के लिए, दोज हु जी। कैन नॉट अफोर्ड। अगर वही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको, यानी अगर आप यहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल्स की इनएफिशिएंसीज अपनी जगह पर मौजूद है और प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर आप इस इनएफिशिएंसीज को भूल जाएं, आप यूटोपिया की बात करें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर फ्री, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सिर्फ ट्रीटमेंट किसको मिलेगा? सर जो पे कर सकते हैं। जो पे कर सकता है, जो जितनी अच्छी सर्विसेज ले सकता है वो बताएं आपको। जब आप किसी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में जाएं
तो वो आपको बताएंगे कि ये वार्ड है, इसके इतने पैसे हैं, ये वार्ड है, इसके इतने पैसे हैं, ये वार्ड है, इतने पैसे हैं, इसमें एयर कंडीशन लगा दो। अनफॉर्चुनेटली बताते ही तो नहीं है, बस वो बिल पकड़ा देते हैं आखिरी में। नहीं, वो आपको शुरू में एक्सप्लेन करते हैं ना, सारे पैकेजेस देते हैं वो आपको कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, आपको एयर कंडीशन रूम चाहिए, आपको सेपरेट रूम चाहिए, आपको कंबाइंड रूम चाहिए, आपको 2 लोगों के साथ रूम चाहिए, आपको 10 लोगों के साथ रूम चाहिए। उनके पास प्राइसिंग है, मैकेनिज्म है, उनके पास एक लिस्ट है प्राइसेस की। जिस तरह आप एक होटल में जाएं तो वो आपसे कमरा बुक करने के लिए आपसे पूछेंगे कि आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, किस तरह का चाहिए, उस हिसाब से आपको जो है वो आपको सेल करेंगे वो कमरा, आपको रेंट करेंगे वो कमरा, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो बड़ी क्रूअल इकोनॉमी है। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है बड़ी आसान इकोनॉमी सेंस में कि वो हर एक के लिए प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट रोड हर एक के लिए बनाती है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ करती है वो हर एक के लिए करती है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो। बट एनीवे, हम जो बात कर रहे हैं वो मार्केट इकोनॉमी की कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी में द आंसर्स ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस कम फ्रॉम मार्केट। Market decides what to produce, market decides how to produce, and markets decide for whom to produce. ये जो market economy है, it actually supports private ownership of resources. It supports what? Private ownership. जो command economy है या जो socialist countries हैं, उनमें जो ownership होती है वो आपकी private नहीं होती. The ownership that you have is like is common. Everybody is like this is owned by the government. And whatever is owned by the government is owned by everyone. I hope I am making sense to you guys. आप लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Oh, good. So if anybody has got any problem, please do let me know. Property rights are exchanged in market transactions. You basically have got the property rights, and that basically encourages the laissez faire है policy of free market, free from tariffs and subsidies. किसी किस्म का कोई टैरिफ्स नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट जब फ्री होती है तो उसमें एक चीज काम करती है जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। आप जानते हैं इनविजिबल हैंड को? नो, नो सर। इनविजिबल हैंड नहीं जानते आप? कोई आप में से जानता है इनविजिबल हैंड को? तो देखिए, अगर गवर्नमेंट प्राइसेस को सेट करेगी, डिपेंड करता है ना कौन सी, डिपेंड करता है कि हम किस कमोडिटी या किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसे एक्सचेंज रेट की अगर बात करते हैं, उसमें अगर हम इतनी फ्री फ्लोट मूवमेंट करते हैं तो फिर तो मतलब कहीं भी जा सकती है ना एक्सचेंज रेट, अगर हम उसकी बात करते हैं। तो डिपेंड नहीं करता कि हम किस प्रोडक्ट या किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए नहीं। नहीं, बिल्कुल एक बात हकीकत है, लेकिन देखिए मसला बेसिकली गवर्नमेंट जब भी इंटरवेंशन करती है ना तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स ये मार्केट को नुकसान पहुंचाती है। समझ रहे हैं आप बात? लेकिन सर अगर हम बाहर की बात करें, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करें, तो वहां पे तो प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी सिर्फ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी वहाँ प्राइस को फ्री कंट्रोल नहीं करती है। गवर्नमेंट कभी भी प्राइस को कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता किस चीज के प्राइस कितने होने चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा वो अच्छे प्राइस होते हैं जो डिमांड सप्लाई पे मेजर होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जरूर इस बात को कंट्रोल, जिस तरह पाकिस्तान में क्या होता है कि गंदुम लोगों ने बेची नहीं और अपने पास स्टॉकिंग कर ली, ये अनफेयर मीन्स है। देखिए, मार्केट के नहीं है, मार्केट में इस तरह से नहीं होता। मार्केट में आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, अगर उसकी डिमांड है तो आप उसकी सप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो असल में जो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कंट्रोल अनफेयर मीन्स एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। Unfair practices involve hoarding of goods or not basically supplying goods at the right time and making like just getting more benefit and just like trying to get the advantage of the position of some other people. Anyway, तो ये कहते हैं कि ना तो आपके पास सब्सिडीज होनी चाहिए, ना ही टैक्सेस होने चाहिए। गवर्नमेंट should not play any role. Market should be left free, and the market should decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. लेकिन सर इसके डिसएडवांटेजेस भी तो बहुत हैं। फिर किस चीज के? फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाती, अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की भी बात करें, तो आप खुद देखें, हमारे पास एक पाकिस्तान का एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 660 वेरिएंट निकाला है। डू यू थिंक वो एक जो उसकी वैल्यू जो भी इन्होंने रखी हुई है वो जो है एक जो सफिशिएंट वैल्यू है उसकी, बट आप चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर अगर मैं सुजुकी की इनफैक्ट नाम ले लूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपने कहा था थोड़ा सा हो रही है। नहीं, अगर हम रिकॉर्डिंग पाक सुजुकी की बात करें
जी जी। अगर उन्होंने 660 का वेरिएंट निकाला हुआ है, हाँ अब वो 660 का वेरिएंट आप देखें क्या उसकी प्राइस जस्टिफाइड है हमारे पास यहाँ पे? अगर हम नहीं, अपनी बिल्कुल नहीं है। व्हीकल कोई भी कंपेयर करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, इंडिया में चले जाते हैं, क्योंकि हमें अपना कंपटीशन सिर्फ उनसे करना चाहिए जो हमारे नियर हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं। जो व्हीकल हमारे पास है उनके पास वही व्हीकल विद मोर देन मेनी ऑप्शंस के साथ, और इसमें सेफ्टीज भी इंक्लूड है, वहां पे ज्यादा मिल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही कोई प्राइस कंट्रोल का कुछ है। एक जो चीज 660 व्हीकल शायद 8-9 लाख की लॉन्च हुई थी, आज वो 1.9 मिलियन पे आके खड़ी हो गई है। 660 1.9 मिलियन जी की हो गई बिल्कुल है। सर 1.8 1.9 मिलियन की हो गई है, और डिलीवरी टाइम का कोई अता पता नहीं है, 3 महीने की कमिटमेंट है, बट वो कुछ भी कर सकते हैं ना। मीन वाइल डॉलर की अगर हाइक आ जाए तो वो कोई आपका क्लेम नहीं है, आप जो है आपकी स्टैंडिंग ही कहीं नहीं है। आज ने 1.8 पे बुकिंग कराई है, 1.8 मिलियन पे डिलीवरी आते आते 1.9 चली जाएगी, आपने 1.9 के हिसाब से पैसे देने। ये ऑल्टो जो 660 सीसी है, ये